ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। पञ्चमस्कन्दः अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच एवं पितरि सम्प्रवृत्ते तदनुशासने वर्तमान आग्निद्रो जम्बूद्वीपौकसः प्रजा औरसवर्धमावेक्षमाणः पर्यगोपायत्। स च कदाचित् पितृलोककामः सुरवरवनिता क्रीडाचलद्रोण्यां भगवन्तं विश्वसृजां पदिमाभृतपरिचर्योपकरण आत्मैकाग्रेण तपस्याराधयाम्बभूव। तदुपलभ्य भगवान् आदिपुरुषः सदसि गायन्तीं पूर्वचित्तिं नाम अपस्परम् अभियापयामास। सा च तदाश्रमो पवनम् अधिरमणीयं विविध निबिड विडबि विडपनिकर संश्लिष्ट पुरड लतारूढ स्थलविहङ्गममिथुनैः प्रोच्यमानश्रुतिभिः प्रतिबोध्यमान सलिल कुक्कुड कारण्ड वळ कलहंसादिभिर्विचित्र मुपकूजितामलजलाशय कमलाकरम् उपबभ्राम। तस्यासु ललित गमन पदविन्यास गतिविलासायाश्चानुपदं खणखणायमान रुचिर चरणाभरण स्वनम् उपाकर्ण्य नरदेवकुमारः समाधियोगेन आमीलित नयन नलिन मुकुल युगलम् ईषद्विकचय्य व्यचष्ट। तामेवाविधूरे मधुकरीम् इव सुमनस उपजिङ्क्रन्तीं दिविज मनुज मनोनयनाह्लाद दुःखैर्हि गतिविहार व्रीडा विनयावलोक सुस्वराक्ष अवयवैर्मनसि नृणां कुसुममायुधस्य विदधतीं विवरं निजमुखविगलितामृदासव सखा सम्भाषणा मोद मदाण्ड मधुकर निकरोपरोधेन द्रुतपदविन्यासेन वल्कुस्पन्दन तनग लश कबर भाररशनां देवीं तदवलोकनेन विवृतावसरस्य भगवतो मकरध्वजस्य वशमुपनीतो जडवदिति होवाच। का त्वं चिकीर्षसि च किं मुनिवर्यशैले मायासि कापि भगवत्परदेवताया हि वज्ये बिभर्षिधनुषि सुहृदात्मनोऽर्थे किं वा मृगान् मृगयसे विपिने प्रमत्तान्। बाणाविमौ भगवतः शतपत्रपत्रौ शान्तावपुङ्करि च अवितदिग्मदन्तौ कस्मै युयुक्षसि वने विचरणविद्मः क्षेमाय नो जडधियां तव विक्रमोऽस्तु। शिष्या इमे भगवत परिदपडन्ति गायन्ति सारसहरस्य वज्रमनिशं युष्मच्छिक्का विलुलिता सुमनोभिवृष्टिः सर्वे भजन्त्यर्षिणादिव वेदशाखाः वाजं परं चरणपचरन्ति तिरिणां ब्रह्मज्ञरूपमुखरां प्रणमामतुभ्यं लब्धा कदम्बरुचिरडविडङ्गबिम्बे यस्यामलातपरिधिक्वच वल्कलं ते किं सम्मृदं रुजिरयो द्विजशृङ्गयोस्ते मध्ये कृशो वहसि यत्र दृशिश्रिता मे पङ्गोरुणसुरभिरात्मविषाण ईदृक् येनाश्रमं सुभगमे सुरभीकरोषि लोकं प्रदर्शय सुहृत्तमतावगम्ये यत्रत्य इद्धमुरसावयवावपूर्वौ अस्मद्विरस्य मन उन्नयनौ बिभर्ते बह्वद्भुतं सरसार सुधादिवक्त्रे
कावात्मवृत्तिरदनादविरङ्गवादी विष्णो कलास्य निमिषोन्मकरौ च कर्णौ उद्विग्नमीनयुगलं द्विजपङ्क्तिशोजिः आसन्नभृङ्गनिकरं सर इन्मुगं ते योऽसौ त्वया करसरोज कदपदङ्गो दिक्षु भ्रमन् भ्रमद एजय देक्षिणी मे मुक्तं न ते स्मरसि वक्रजडावरूधम् कष्टो निलोकरदिलबडयेश नीवी रूपं तबोदन तपश्चरदां तबोघ्नं ह्येतत्तत्तु केन तपसा भवतोपलब्धं चर्तुं तबो हरिमया सह मित्रमह्यं किं वा प्रसीदति स वै भवभावनो मे न त्वां त्यजामि दयिदं द्विजदेव दत्तं यस्मिन् मनो दृगदिनो न वियाति लग्नं मां चारुशृङ्गहसि नेतुमनुव्रतं ते चित्तं यदप्रतिसरन्तु शिवाशजिव्यः श्रीशुक उवाच इति ललनानुनयादिविशारदो ग्राम्यवैदग्धया परिभाषयातां विबुद्धवधूं विबुद्धमतिरधिसभाजयामास सा च ततस्तस्य वीरयूधपदेर्बुद्धिशीलरूपवयः श्रियौदार्येण पराक्षिप्तमानस्तेन सहायुतायुधपरिवत्सरोपलक्षणं कालं जम्बूद्वीपपतिना भौमस्वर्गभोगान् बुभुजे तस्यामुह वा आत्मजान् स राजवर आग्निद्रो नाभिकिं पुरुषः हरिवर्षलावृतरमज्ञक हिरण्मय कुरु भद्राश्व केतुमाल संज्ञानव पुत्रा जनयत् सासुध्वाद सुदानवानुवत्सरं गृह एवापहाय पूर्वचित्ति भूय एव अजं देवमुपतलस्ते आग्नीन्द्रसुतास्ते माधुरनुग्रहादौल्पत्तिकेनैव संहनन बलोपेताः पित्रा विभक्ता आत्मतुल्यनामानि यदा भागं जाम्बूद्वीपवर्षाणि बुभुजुः आग्नीद्रो राजा तृप्त कामाना अपःसरसमेवानुदिनमधिमन्यमानस्तस्य सलोकतां श्रुतिभिरवारुन्द यत्र पितरो मादयन्ते सम्बरेदे पितरि नव भादरो मेरुदुहीर्तिर्मेरुदेवीं प्रतिरूपा उग्रदंष्ट्रीं लतां रम्यां श्यामां नारीं भद्रां देववीतिमिति संज्ञा नवोदवहन् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे आग्नीद्रवर्णनं नाम द्वितीयोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते।